पेशावर वैली की हद तक हम सैकड़ों वकीलों को ट्रेन करते रहे हैं। यहाँ पे मेरे पार्ट पे लैब्स है, औरों के पार्ट पे लैब्स है, सिस्टम के पार्ट पे लैब्स है कि बिकॉज while becoming an advocate there are three parts. First part, I'm speaking of the developed world. First part is academic stage. Your LLB is academic stage. Then there is vocational stage. At least 1 year there is vocational stage. Bar course is vocational stage. And then training stage. Your apprenticeship is training stage. So in this system we skip the vocational stage. अच्छा. So एक लेक्चर में या 40 मिनट का लेक्चर था, उसमें 15 मिनट उड़ गए, तो 25 मिनट में इस पे क्या कर सकता हूँ मैं? ये तो सालों का कोर्स उधर होता है. But at least we can have a good start and we can have an eye on some basics. Some basics we can discuss. अच्छा, एडुकेसी से मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि ये साइंस है कि आर्ट है? आर्ट किस तरह है? आर्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? ये स्किल है इंसान के अंदर, अपना खुद एतमादी का स्किल है जो दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे को बात किसी के सामने रख देता है और उसको समझाता है. और कोई ये राय है कि ये साइंस है इस हाउस में, जो समझता हो कि ये साइंस है? अच्छा, साइंस और आर्ट्स में फ़र्क क्या है? साइंस वो चीज़ होती है जिसमें चीज़ें हम नाप सकते हैं, जिसके लिए ऑब्जेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड पैरामीटर्स होते हैं. मसलन साइंस में हम कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट्स आते हैं. आर्ट्स में हम नहीं कर सकते. मसलन गुलकारी एक आर्ट है, तो हम कहते हैं आर्ट में चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं, साइंस में क्वांटिटेटिव होती हैं. तो गुलकारी में हमारे पास ये पैमाना नहीं है कि ये अच्छा गुलकार है तो पीएच स्केल पे ये 13 आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते. सो एडवोकेसी इज predominantly a science and to some extent it is an art. साइंस हुआ, इसका मतलब यह है कि इसके बहुत बुनियादी लवाजिमात हैं जिनको आप ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते. आर्ट इसका बड़ा हिस्सा है. मसलन मेरी आवाज़ किस तरह हो, मेरी मॉड्यूलेशन किस तरह हो, मैं कोर्ट को एड्रेस किस तरह करता हूँ, ये आर्ट है. मैं कन्विंसिंग किस तरह करता हूँ, मैं ब्रीफ एंड एलाबोरेट किस तरह हूँ, ये आर्ट है. लेकिन बहुत सारे बेसिक नॉर्म्स हैं इसके जो कि साइंटिफिक हैं. अच्छा, जस्ट टू हैव अ स्टार्ट, एडुकेसी के टू बी साइंटिफिक, एडुकेसी के दो पार्ट्स हैं या इसको दो में तकसीम किया जाता है. फंक्शनल एडुकेसी और परसुएसिव. Functional education and persuasive education. Persuasive का तो मतलब शायद आप समझते हो कि परसुएट करना, वकालत का वो हिस्सा जिसमें परसुएट किया जाता है दूसरे को. दूसरा कौन है? कोर्ट को. लेकिन फंक्शनल क्या है? फंक्शनल का कोई मतलब समझता है? Functional education, we said two parts. Education consists of two parts, functional and persuasive. Functional education is the first part. I open a case. I open a criminal case. So my first part is functional advocacy. So I start that, Your Honor, this appellant or this accused has been implicated in FIR number 6, police station Rahimabad, under section 302, 34 PPC. This is first part.
Secondly, he was arrested on so and so. So he was charged under this section. In first instance, his bail was refused. 4 witnesses were produced by the prosecution. And so blah, 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 blah. You are functional. You are no more partisan. You are fair. You are officer of the court. Once that facts part is finished, you enter into persuasive advocacy. Persuasive advocacy. Now in this part, you are no more impartial officer of the court. Now you are partisan advocate. And you persuade the court. You persuade. Here you use your skills, how to make the judge order in your favor. So once the functional part is finished, the facts part is gone, you become persuasive advocate. Many things change. Your tone changes. Your style of arguments changes. So here, for example, again, let's say a case of, you are arguing bail. So you say that this is accused, he was arrested and so on the allegation of having narcotics with him, and this is gone. Now you enter. So persuasive advocacy. Now here you say, look at the recovery memo, Your Honor. No independent person has been associated as witness. So there, your tone is mild. Your tone is mild. You are giving facts. Here, your tone becomes somewhat emotional. Now, what our lawyers do? They mix up both things. And this is fatal for the practice. For example, it is also in pleadings. हम दरख्वास्त ज़मानत लिखते हैं जो हमारे प्लीडिंग्स में हाई कोर्ट की हद तक या बाज़ नीचे भी मसलन हम कहते हैं facts. Your facts is functional advocacy. Your grounds is persuasive advocacy. हम बेल दरख्वास्त लिखते हैं कि the accused, first paragraph is the accused has been falsely implicated in the case. Falsely is your ground. So you should write here, the accused has been implicated in the title case, in the captioned case. The accused has been implicated in this case. This is fact. In your grounds, you should write that he has been falsely implicated. For example, you have brought a writ petition. And your case is that I applied for the post. The respondent applied for the post. He has been unlawfully appointed because he is not having the requisite qualification, for example. So what all rights brothers say that there was an advertisement, annexure A. I applied my application, annexure B. Respondent number 3 was unlawfully appointed. This is not the place to mention your unlawfulness. This is your ground. This is a fact that he was appointed. So you just write, pursuant an interview, respondent number 3 was appointed. Appointment order is annexure 3. Now when you come to your grounds, you say that it is illegal because he is lacking the requisite qualification. So, चाहे आप ज़बानी दलाइल दे रहे हों या आप प्लीडिंग्स में हो, आप लिख रहे हो चीज़ें, इनका ख्याल रखना चाहिए. और इनका ख्याल रखना क्यों ज़रूरी होता है? Scholars of this discipline say that
in functional advocacy, you are impartial. And when you assures your impartiality here, the judge will trust you there. मसलन क्या करते हैं वो, उस दिन हमारे एक वकील साहब आर्गुमेंट्स कर रहे थे अपील अगेंस्ट एक्विटल में, और स्टार्ट उन्होंने ये लिया जिस सरदा कोई पारमानू न मर कड़ा दे न अरमानू न खबर सुराजी और खबर तदावे ची दादा फैक्स थी. Now in this the judge has to write a judgment, and for his judgment he has to note facts, and for that part he has to take notes. So while being impartial here, you are helping him, you are getting his pleasure. क्या करते हैं हमारे वकील साहबान, मसलन फॉर एग्जाम्पल you are again arguing a case of bail, for example, and the judge is taking notes. So you say that this petitioner was charged in the caption FIR under section so and so, in police station so and so. Okay, right. A judge may ask question, is there any recovery? And you say, sir, wo to recovery is tarah hui hai, ye hui hai, ye hui hai. So he is confused. You are annoying him. This is your later ground. अब अच्छा, और रियलिटी ये है कि आपसे हुई रिकवरी, आप फैक्ट्स दे रहे हैं और जितने सवाल पूछा रिकवरी हुई है, तो आप कहते हैं यार ये तो मैं फंस गया, तो आप दलाइल देना शुरू कर देते हैं. So your answer should be that yes, Your Honor, or at least you can say that allegedly yes, or you can say that recovery has been attributed to the accused. Yes. Later on, when you are arguing the case, facts concluded, you enter, and then you say that yes, the prosecution case is based on recovery, but your lordship may peruse the recovery, may move, and blah blah blah. So you can qualify things. We had a senior barrister in Lincoln's Inn. He was a Queen's Counsel. Queen's Counsel जानते हैं? Queen's Counsel इस तरह होता है कि मसलन हमारे वकला की कैटेगरीज ये हैं कि एडवोकेट लोअर कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, we have advocate Supreme Court, and we have senior advocate Supreme Court. That is a separate status. Senior advocate Supreme Court here, he has to wear gown around the year in every court, and this status is conferred upon advocates of Supreme Court by the Chief Justice of Pakistan. The concept is akin to Queen's Counsel in England. यहाँ पे चीफ जस्टिस देता है टाइटल, वहाँ पे क्वीन की तरफ से ये होता है. तो यहाँ पे गाउन पहनते हैं, वहाँ पे वो विग पहनते हैं. तो those are senior most counsels. So a Queen's Counsel was saying in a seminar that nothing annoys the judges more than not answering his questions. जज को गुस्सा दिलाने का आसान तरीका यह है कि उसके सवाल का जवाब मत दो. उसके क्योंकि वो फैक्ट्स लिख रहा है, वो कोई डिसीजन नहीं कर रहा उस वक्त, आपके हक में शायद कर रहा हो, लेकिन फैक्ट्स तो वो लिखेगा, और फैक्ट्स पार्ट को तो आप अपने दलाल में उस वक्त फैक्ट्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते. फैक्ट्स को रिफ्यूट कर सकते हैं कि ये फैक्ट गलत वो दे रहे हैं, इस तरह नहीं है. सो इन फंक्शनल एडवोकेसी you have to gain the confidence of the judge, so he may trust you while you reach here. Persuasive advocacy. यहाँ तक कोई है क्वेश्चन आपका, कोई कमेंट, कोई इस तरह कोई फीडबैक, या आपके साथ कोई अपना एक्सपीरियंस हुआ उस तरह के? हाँ जी.
तो वहाँ पे जब कोई D9 का बैन था, मैं प्रोसिक्यूशन के साइड से था। उनकी आर्गुमेंट स्टार्ट हुई तो हमारे यहाँ के सीनियर वकील वो अपने आर्गुमेंट्स में कह रहा था, बार-बार साहब एक क्वेश्चन कर रहे थे कि चेक आपने दिया है, वो बार-बार इस बात को टाल रहे थे। Good example, very good, and I appreciate that you got this lecture. उसको ये कहना चाहिए था कि check, the question would be from the bench side that did you hand over the check to the complainant? And he could say that yes, Your Honor, the handing over of check has been attributed to the petitioner, attributed to him. और फिर वो आर्गुमेंट्स में कहता कि जनाब ये वाला बिल्कुल एट्रीब्यूट तो हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लासेस में है उनमें बेल होना चाहिए। ये तो फिर ट्रायल की बातें हैं कि किन हालात में चेक लिया गया था, लिया भी गया था कि नहीं लिया गया था, ये तो फिर ट्रायल की बातें हैं। 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है और 2 साल में गुजार लूँ तो ये तो प्री सेंटेंस में, प्री कन्विक्शन में सेंटेंस, तो ये आर्गुमेंट्स फिर हो सकते थे। तो उन्होंने फैक्ट्स में उनको एनाय कर दिया और उसको फिर उसका सिला मिल गया इस तरह। सो दीज आर द इंस्टेंसेस फैक्ट्स पार्ट में। और वो क्वींस काउंसिल जो कह रहा था, वो एक चीज़ ये कह रहा था कि नेवर पुट डिस्प्यूटेड मैटर्स एज फैक्ट्स। आपको पता होता है ना कि कौन सी चीजें डिस्प्यूटेड है, कौन सी नहीं है। कल इस तरह हुआ कि हमारे लिए एक लार्जर बेंच बन गया था। वो देयर एट प्रिंसिपल सीट वी वर हैविंग अ लार्जर बेंच एंड द मैटर वाज द आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स. Honorable High Supreme Court has ordered that all police officers who have been promoted out of turn should be sent back to their original positions. So the judgment pertained to Sindh and Punjab. In the KP, there were accelerated promotions, not out of turn. So we had challenged those cases, and we argued the case from 9 till 3:30, and most of the part of arguments pertain to facts. So when I finished with this part, the learned AG KPK, he said that I have no dispute with facts. क्योंकि फंक्शनल एडुकेसी में अगर आप फैक्ट्स पे गलत बयानी कर लेंगे, आप एक चीज़ को पेश करें कि ये फैक्ट है और वो डिस्प्यूटेड फैक्ट हो, तो फिर वो वकील आएगा, वो कहेगा कि ये तो गलत कह रहा है, ये तो इस तरह था नहीं, तो फिर आपके ये परसुएसिव पार्ट रह जाएगा। फैक्ट्स में आप उसके साथ उलझ जाएंगे और जज को एनाय करेंगे। सो यू मस्ट ऑलवेज बी क्लियर इन माइंड दैट वेदर आई एम इन परसुएसिव और फंक्शनल। ये डिस्टिंक्शन प्लीडिंग में भी है, जगह जगह पे है, ये डिस्टिंक्शन आर्गुमेंट्स में भी है। फॉर एग्जाम्पल हम मसलन सिविल डिवीजन हम यहाँ पे फाइल करते हैं और आपका केस ये है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। हम क्या कहते हैं फैक्ट्स में, that the petitioner is owner in possession of the suit property, that respondent number 1 filed a declaratory suit. Now filed a declaratory suit, this is fact, yes, but whether you are an owner or not, this is disputed matter. So how to be good in drafting? You write that respondent number 2 brought a declaratory suit with respect to certain property fully explained in the head note of the plaint. This is fact. Yes. That the present petitioner entered appearance and filed his written statement. B. C. That as per stance of the present petitioner, he is owner in possession of the property per deed so and so. So you are qualifying that per his stance. So you are not presenting a disputed matter as fact.
ये आपका स्टांस है, आपका स्टांस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब वो डिस्प्यूटेड मैटर हो, नेवर पुट इट एज अ फैक्ट. सो आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. टाइम कितना है हमारा? 15 खैर जी, खैर. सो कोई और एंड योर इनपुट, कोई और आपने इस तरह महसूस किया हो या आपने कोई गलती इस तरह की हो? मैंने की है, बेशुमार इस तरह की हैं, हम सब करते हैं. और अब जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो इस तरह नहीं करना चाहिए था, कि डिस्प्यूटेड मैटर को हम एज फैक्ट रखते हैं और फिर वो इस तरह होता नहीं. किसी और के साथ इस तरह हुआ है? यह सबके साथ होगा. तो एक लेसन तो आज का ये होगा कि जब बेल पिटीशन होता है तो उसमें हम ये नहीं लिखना कि द petitioner has been falsely implicated in the case. This is your ground. You write that the accused has been implicated in the caption FIR. And in your ground you say that the accused has been falsely implicated. इस तरह क्लैरिटी आ जाती है. इस पे हम फिर मज़ीद करेंगे. कुछ चीज़ें जो हैं 15 मिनट में हम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन. सो these are scientific aspects of advocacy. These are not artistic. These are scientific. ये अगर हम करते हैं तो ये blunders करते हैं. And in some manner we are breaching the code of conduct, because per code of conduct we have to be fair before the court. Artistic पे कुछ मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ. Artistic part is the one in which you are good, you could be excellent, you can be extraordinary, you can be fair, you can be below average, you can be poor, but there are no hard and fast rules. We used to train judges on judgment writing because their work is related to writing. So we would start the training with hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they said that ahsanul kalame ma qalla wa dalla wa lam yumil. The best speech is the one ma qalla, which is qalla is from qalil, which is brief, which is precise. Wa dalla from dalil, which is based on reason and logic. Wa lam yumil, which is free from boring content. So this is very much true for advocacy, and this is artistic part of advocacy, that you should be brief and precise. Your speech, by the way, we call it arguments, they call it speech. In England they call it speech. Opening speech, closing speech. The one who gives his arguments is opening speech. So your speech is brief and precise. It is based on logic and reason, and it is free from boring content. बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो कि इंतहाई मुदल्लल करेंगे, लेकिन उनका स्टाइल बोरिंग होता है. आपने नोट किए हैं इस तरह वकील? इसके बरक्स बहुत ही आम वकील होंगे लेकिन उनका स्टाइल बोरिंग नहीं होगा. तो उससे भी बचना है, उससे भी बचना है. And that Queen's Counsel, he was saying that advocate is a storyteller. Advocate, और इस पे किताबें भी हैं, advocate as a storyteller. वकील के पास अपनी कहानी होती है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास कहानी है, आप ज़रा मुझे सुने, मैं आपको अपनी कहानी भेज रहा हूँ. जिस तरह एक सेल्समैन कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी दवाई बेचने या उससे मुताल्लिक़ कहानी सुनाने डॉक्टर के पास जाता है, तो इस तरह आपके पास एक कहानी है, आप जज के सामने आते हैं. So have you noted that the most suited
and booted persons in the society are medical reps. वो बहुत ही सूटेड बूटेड जाते हैं ताकि वो डॉक्टर उसकी कहानी पे यकीन कर ले. Same is for the counsel. He should be in the best dressed ताकि जज उसके स्टोरी पे यकीन कर रहे और उसकी फेस पे थोड़ा स्माइल भी हो. ये भी पॉजिटिव असर डालता है. तो कहानी शुरू करने से पहले ये दो चीज़ें हों तो जज कम से कम सुनने के लिए आपको देखेगा. वॉइस मॉड्यूलेशन भी है चीज़ें. अच्छा, आपने सीधा खड़ा होना है. वो कहते हैं कि यू शुड बी इन 90 डिग्री एंगल. लेकिन 90 डिग्री एंगल में ये गलती अक्सर हो जाती है कि हम थोड़ा पीछे बेंट होते हैं इस तरह. तो एहतियातन ये है कि थोड़ा इस तरह झुक के, यानी इट शुड बी 95 और 100 डिग्री एंगल, बजाय इसके कि मैं थोड़ा पीछे गया हूँ, थोड़ा आगे की तरफ. Now, voice modulation. Voice modulation, as I said, that advocacy comprises of two parts, functional and persuasive. So, in functional part, your voice is mild. Your voice is mild. So, for example, I'm starting a revision arising out of civil case in preemption. So I start that, Your Honor, the present petitioner filed a suit in a preemption case and he claims to be a contingent owner and the sale was made YDD so and so, which is on page 6. Sale consideration was 30 million rupees. Majlis is the batak of the present petitioner. Witnesses are Mr. So-and-so and Mr. So-and-so. One is brother of the petitioner, the other is his servant. Notice Talabi Shahad is exhibit 1/3, PW 1/3, which was sent through district post. Postman has deposed as PW 5. So these are facts. These are facts. When the facts have concluded, now you enter persuasive part. Your tone changes, and as I said that your tone, your volume increases a bit. And slightly it becomes emotional. Now you say that, Your Honor, I have been concurrently non-suited on the ground that instead of clerk of post office, postman has come forward, Your Honor. Now, this assertion is against the judgment of Supreme Court reported as SCMR so and so. So your tone changes. समझ आ गई इसकी ना? सो फंक्शनल में आप जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होते और जज को आपकी आवाज़ से पता होना चाहिए कि आप फंक्शनल में हैं, आप इस वक्त इम्पार्शल हैं. तो जब इस वक्त आप इम्पार्शलिटी आप अपनी एस्टेब्लिश कर लेंगे, वहाँ वो आप पे एतमाद करेगा. ये मैंने कहा कि ये तो एक ऐसा सिलसिला है कि 1 साल कोर्स होता है. तो हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आगे इस तरह इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा. और मैं जनाब सदर को इंतहाई ज़्यादा दाद देने दूंगा क्योंकि ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया और इंतहाई शफ़क़त का मुज़ाहिरा किया कि आप लोगों को के लिए ये कर दिया, वरना ये ट्रेनिंग करने के लिए लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं. तो ये सिलसिला मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जारी रहे. और आज तो हमने बुनियाद रखने की कोशिश की, वो भी शायद न रख सके. तो कुछ चीज़ें जब परसुएसिव की हद तक और वो भी आर्ट्स की हद तक, नॉट साइंस, साइंटिफिक पार्ट्स आप समझ गए, आर्टिस्टिक पार्ट आप समझ गए, फंक्शनल आप समझ गए, परसुएसिव आप समझ गए. नाउ इन परसुएसिव एंड इन आर्टिस्टिक पार्ट, हाउ टू बी गुड.
टोन के साथ साथ आपने कब तेज होना है, आपने कब स्लो होना है। वो चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा अहम नहीं है वो आप तेज तेज कर सकते हैं, वो आप तेज तेज कर सकते हैं। मसलन किसी गवाह का बयान आप पढ़ रहे हैं, मसलन शुफा के केस में डिफेंडेंट कहता है कि हाँ नोटिस तलबी शहाद मसलन मुझे मिला था और उसका केस ये है कि मुझे तो सिरे से खबर ही नहीं है, तो आप उसका बयान पढ़ रहे हैं, आप उसका बयान पढ़ रहे हैं और ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो बाकी बयान में तो आपके काम की चीज़ नहीं है, तो आप सीधा जा रहे हैं यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि मैं मैट्रिक तक तालीम याफ्ता हूँ, मैं ये है, मेरा वो है, मैं उस वक्त ये कर रहा था, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, पढ़ते हैं नोटिस तलबी इशहाद मुझे मौसूल हुआ था। आप इस तरह करते हैं। Have you seen, you'd have watched movies. मूवीज में बाज़ चीज़ें क्लाइमैक्स की होती हैं। For example, and in climax, the movie maker wants the audience to focus on something. So, one way of making the people focus on something is to make it in slow motion. So, for example, you'd have seen that in the climax, when there is a concluding fight between the hero and villain, and the hero makes a fatal punch to the face, so it comes in a slow motion like this, and the face moves this way very slowly, and there's a spit. What is the purpose of this? The director or producer wants the audience to focus on this very scene. So, persuasive में अगर फाइल में कोई इस तरह की चीज़ हो जो आपका केस मजबूत कर रहा हो, तो वॉइस आपका जज्बाती होता है उस वक्त, लेकिन आप थोड़ा स्लो मोशन में होते हैं, आप थोड़ा स्लो मोशन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कल हमारा केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस बिफोर द लॉयर बेंच द क्वेश्चन वाज दैट वेदर द प्रेजेंट promotions are out of turn or not. So it was 400 pages judgment of the Supreme Court. There was a small paragraph which was in our favor. So when I reached there, I moved to slow motion. So I said that in paragraph 133, at least there was some justification in allowing accelerated promotions only to the extent of ASIs. And my lord, this is my entire case. So, the artistic part is a skill, and you have to practice. And for practice, you'll have to spend time. But at least keep these things in your mind. And inshallah, we will be discussing these things in our future. So I'm grateful to the cabinet, and we hope we meet again. Thank you very much.